Dear student, welcome back. You are here again with me with new video. Today we are going to talk about very interesting topic that I have taken from your grammar. Yes, modals. I'm not talking about model. Fashion की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about auxiliaries. Model here means auxiliaries. These are some helping verbs. See, there are two kinds of auxiliaries. The first one is those auxiliaries which we generally learn in tense. Just to understand that what timing or what issue we are discussing. भाई किस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस समय की हम बात कर रहे हैं. तो at that time there are some helping verbs and these are is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, etc. Right? These are the helping verbs which help us to know that what timing we are discussing. And the second one is here the mode. What mode? Modals. Yes, I'm talking about the modals. See here. Right? Modal. Auxiliary verb. These are the sahayak kriyaएं. Right? Next one is the express what? Right? These modal expresses the mood. हमारे mood को express करता है. In our mood, it expresses the possibility. Express the what? Advices, consultations, abilities. Not only that, but there are so many things that I will let you know later in the video. So you stay with me till the end of this video. Let me tell you. See, a verb that helps another. I'm talking about other kind of auxiliaries. As I said that there are two kind of auxiliaries. सहायक क्रियाएं दो तरह की होती है. Right? A verb that helps another verb. Right? एक जो verb होती है, क्रिया होती है, help another verb. दूसरी verb को help करती है. To form its tense. इसका tense बनाने के लिए. Right? इसके voice और mood बताने के लिए is called auxiliary verb and sometimes it is known as helping verbs. These are the helping verb. This is also a helping verb but different in nature. Right? Auxiliaries that express the mood of the action, जो action के mood को, right, हमारे भाव को व्यक्त करता है, right, denoted by the main verb. ये main verb के साथ सीधा directly use किया जाता है, are called modals and main modals are, मुख्य modals कौन कौन से हैं? Let's see here. Can, could, may, might, right, will, would, shall, should, right, ought to, used to, need, dare, etc. Right? These are some very important models that I will let you know later in the video. Right? I once again reiterate my words. Stay with me till the end of this video. Now, come here. Feature of models. What are some special feature of the models? See, use with main verb. ये हमेशा मुख्य वर्ब के साथ ही इसका यूज किया जाता है. मैं आपको आगे बताऊंगा. Right? It has no infinite verb. Infinite means use of to before that. किसी भी verb से पहले जब to का यूज किया जाता है, to make, right, to use, ऐसे से कुछ कोई भी verb और उस verb से पहले जब to का यूज किया जाता है, that means it is infinite, right? But it has no use of to before the to can, to might, right, to will, to, right? We cannot use that. Right? No use of to before it. Yes, I said. No change in the subject's number and gender. Very interesting thing is here about modals are, in modals की बड़ी interesting और बड़ी ही अच्छी खासियत क्या है कि आपके subject, right? Subjects का कोई भी number है या gender है, कितने भी क्यों ना बन जाए वो, एक से ज्यादा है चाहे एक ही है करने वाला, कर्ता एक है चाहे many है, वो चाहे स्त्री है या पुरुष है, we will not use our auxiliary. यहां पे हम auxiliary का यूज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे. It will stay right same. ये बिल्कुल एक तरह से अनचेंज रहेगा. right? Subject number and gender पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आपने can यूज किया है तो it can, he can, she can, they can, Ram can, Nam can, right? With everyone. ओके, यूज एज हेल्पिंग वर्ब. इसको एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है. यस, मैं पहले बता दी. ओके, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हेनेवर यू आर यूजिंग दीज मॉडल्स, यू विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट? जब भी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर रहे हो, इन मॉडल्स का यूज कर रहे हो, सो दैट टाइम यू विल यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अदरवाइज इन द अदर ऑक्सिलरीज, अगर आप हैज का यूज कर रहे हो, हैव का यूज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि उसका वर्ब भी चेंज हो जाता है. बट हियर नो चेंज एट ऑल. ओके, एडिंग हैव विद मॉडल.
Suppose you are adding have with our model, right? अगर आपने will have किया, shall have किया, तो आपका आने वाला जो verb होगा सेंटेंस में, you have to add third form of the verb. Okay, use of to, yeah, that's very important here. After used and ought, right? These are very interesting things that I will tell you later in the video. मैं आपको बाद में बताऊंगा. Use of to, after कहां पे यूज किया जाता है? Used और ought के बाद to का यूज किया जाता है. For what? I will tell you. Okay, need, there, used. They are also used as what? किसके साथ यूज? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है. एंड समटाइम इट इज कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड मॉडल, मार्जिनलाइज्ड, और समटाइम इट इज कॉल्ड व्हाट? इसको सेमी मॉडल भी कहते हैं, इसको सेमी मॉडल्स भी कहते हैं. नाउ मॉडल एडिंग बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सी देयर आर सम मॉडल्स. भाई कुछ मॉडल्स के साथ अगर आप लाइक मे होता है ना, मे के बाद अगर आपने बी यूज किया है, इफ यू आर यूजिंग बी आफ्टर द मॉडल, सो यू हैव टू राइट व्हाट? सी वर्ब के साथ आईएनजी लिखोगे. हाउ? हियर इज एन एग्जांपल. ओके, ही मे बी वेटिंग फॉर यू. Dear student, that was just the introduction. That was some very interesting features about the models, that how and what is there. You stay with me. I will tell you through the slides. See, let's start with the use of can as model. As I said, that model never changes form like that of other auxiliary verb which we generally use in the tense. Like, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कैन कभी नहीं बदलेगा, मॉडल कभी नहीं बदलेगा. ओके, वी आर यूजिंग कैन एज ए model here. You will see that it has no changes at all. But which one and what features and what kind of things you can express in the can here? See, can here means be able to. You are capacitated for something. For what? I will let you know later in example. And know how to. And it expresses the possibility. Right, present capacity and ability. It expresses the present. आपकी present की जो capacity है, ability है, इसके बारे में ये बताता है या express करता है. In permissions, right, seeking permission in present and in futures, that can be expressed through the can. And the possibility, can use, right, possibility, संभावना. Okay, not only that, but you will see something more about. See through the example here. Can express the present ability and capacity of the persons. Like, I can swim across a river. I can do this. I can solve the sum. Can you leave this box? Right? It expresses the permission in present and future. Like, you can go now. Right? You can go home now. They can play in my garden. And seeking permissions. Can I use your umbrella? Can I go home now? And expressing the possibility. Like, anybody can do it. They can reach here at anytime. These are some use of can in which we shows that how we can express our possibility, capacity, ability, etc. Okay, not only that, but also with permissions and seeking permission and giving permissions are there. Use of could, right? The could is very interesting here, right? The could is the past form of can. Can का past है. Express past की abilities, possibility, probability, right, and permissions that you could seek in the past. Past की बात करेंगे, ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकता था, वगैरह वगैरह. And uncertainty, it is something that's uncertain. And seeking permissions, giving permission, all these things, right? And very interesting thing about the use of could is here for request. भी request purpose के लिए हम use कर सकते हैं किसका? could का. Let's see through the example. How? Could is the past form of can. How can you express that? He said that he could finish the task in a day. You know, एक दिन में खत्म कर सकता था जब उसने कहा तो. Okay, I asked him, उससे पूछा, I asked him if he could solve the sum, कि क्या उस sum को solve कर सकता था. Expressing the capacity and ability in the past, like when he was a boy, he could speak 2 languages. I could read without classes until a year ago. And to seeking permissions. राइट इस रूप में कुड का जो यूज है अनसर्टेनिटी के लिए किया जाता है. अनसर्टेन है, दैट इज, यू नो, कुड आई टेक योर एडवाइस ऑन दिस मैटर, कुड आई यूज योर कार. एंड टू एक्सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट, ही कुड बी वेरी रीजनेबल. इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार.
एंड ऑफर एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. Could you make a cup of tea for me, please? And could you help me, please? Could we arrange dinner for the guests? Right? And now a very important one is here. Using could with have and third form of the verb. ऐसे कार्यों के लिए जो actually complete नहीं हो पाता है. Like I could have visited her place. क्योंकि उसकी यहाँ मैं जा सकता था, but I didn't. I didn't. She could have told me about it, but she didn't. बता सकती थी लेकिन नहीं बताया. There is one more use of could, right? Past में permission को express करने के लिए generally we use general permission in the past. could का use करते हैं. But किसी विशेष कार्यों की अनुमति के लिए इसके स्थान पर could के स्थान पे हम was और were allowed to का use करते हैं. Like on Sundays we could stay at home, right? That's the formal one. He could go whenever and wherever he wanted to. And the very important one, he and I had a visa. He had a visa. So he was and I was allowed to cross the border. विशेष अनुमति के लिए, कार्यों की अनुमति के लिए इसका यूज किया गया है. Let's see the use of may now. May here, right? Denoting permission in present and future. Future में या present में permission को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है. राइट, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, विश, ब्लेसिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एंड पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट पॉसिबिलिटी समटाइम यूज फॉर द सजेशंस एंड एडवाइस एटसेट्रा. हाउ? यूज ऑफ मे टू एक्सप्रेस द परमिशंस इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आज्ञा या अनुमति के लिए. लाइक these students may not appear in the examination. After work you may take rest. And seeking permissions like may I come in, so maybe go home now. And to express the possibility, probability, like it may rain today, the train may come late today. There is the possibility of happening, expressing the wish and blessing, like may you live long and may God bless you. सी ऐसे वाक्यों के अंत में हम एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, उसको तो मे का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ मे टू एक्सप्रेस क्या पर्पस के लिए, जनरली सो दैट के बाद में प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए मे का यूज किया जाता है. लाइक यू शुड वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास एंड वी ईच सो दैट वी मे लिव. पास्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ही मे हैव लॉस्ट हिज पे, यू मे हैव हर्ड अबाउट अशोका द ग्रेट. And sometimes we can make use of as may as well का प्रयोग वर्तमान में किसी सजेशन से एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए. लाइक यू मे एज वेल गो बाय बस से भी जा सकते हो. शी मे एज वेल स्टे एट होम, घर में भी रह सकते हैं. नाउ द यूज ऑफ माइट, एंड हियर द माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, राइट? पास्ट फॉर्म ऑफ मे. इट हैज स्लाइट पॉसिबिलिटी, इट हैज वेरी मच स्लाइट, बहुत ही कम संभावना होती है किसी भी चीज के होने की. राइट, पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. नॉट ओनली दैट बट आल्सो इट एक्सप्रेस द पोलाइट रिक्वेस्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस यूज. माइट का यूज जब हम करते हैं तो कुछ ज्यादा ही आई विल टेल यू हाउ. नेक्स्ट इज द पास्ट हैपनिंग यूजिंग हैव प्लस माइट हैव. तो जब माइट हैव हम यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगेगी, बट एक्चुअली वो चीज वास्तव में हुई नहीं होती है. ओके, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए. And after might, you will use so that, right? Might के use करने के बाद आगे sentence में you will use the so that. How? I will let you know. And it expresses the dissatisfactions and proper advice, and suggestion and advice as well. See total example. Use of might now. Might is the past of may. Like she asked me if I might see her. He said that it might rain today. Like slight possibility को express करने के लिए, like he does not work hard but he might pass. The sky is clear but it might rain today. Is it possible? Sky clear है, बारिश हो जाए, काम ना करो और पास हो जाओ. No. Past possibility को express कैसे करेंगे? He might have stolen my pen. The teacher hoped that he might pass. A slight possibility of happening actually. So polite request को express करने के लिए the same way as we use may. Like might I have your book for today? Might I say a few words in his praise?
whenever using such expressions, it gives more doubt. Okay, by using might, may use करे तो there is a possibility, but might का use करने से हमें doubt हो जाता है. Okay, next one is the use of might have with third form of the verb. Such incident and such happening which actually not happened. Okay, you might have caught the train. कर सकते थे, caught कर सकते, but you did not. She might have got success, but she failed. Okay, showing the purpose of past कौन से so that के बाद might का use करते हैं हम, like Gandhi died so that India might live, ताकि वो India might live हो सके. He worked hard so that he might win a scholarship. And to showing the proper advice and suggestions using might as well, like she might as well use my books then, क्योंकि मेरी किताबें भी तो वो use कर सकती थी या यूज कर सकती है. Yesterday you might as well attend the class, कर सकते थे. Okay, and dissatisfaction and reproach को express करने के लिए, like you might care a little more about your health, just the see dissatisfied with this, भी थोड़ी सी और आप इस पे health का care कर सकते हो. He wasted his time, she wasted her time. He might study hard instead, इसके बजाय आप मेहनत भी कर सकते हो. Dear student, the first part of the video will be stopped here today, and the remaining models will be discussed in the next part, in the second part of the video, which will come very soon. Till then, get mastery over all these models which we have discussed here. Not only that, but also I'm leaving some example for you to solve. Stay blessed. Thank you.